federal government has silently tried to take approval from the Indus River System Authority for construction of 6 canals. और उस हवाले से जब वो इरसा में गया मामला तो जो सिंध के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, बट डिस्पाइट दैट इरसा अप्रूव्ड इट। और उसके बाद से एक सिंध के अंदर जो है वो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस हवाले से। Why Sindh is objecting to it? Why Sindh is objecting to the canals? Is Sindh is opposed to the canals or is it opposed to the GPI project in general? इसके ऊपर हम बात करते हैं, सिंध के objections को understand करने की कोशिश करते हैं। There is already a hardened approach on Balochistan. We are, as Army Chief said, that we need to have a hard state approach towards Balochistan. If we are having a hard state approach towards Balochistan and Sindh, using the same approach in Sindh is likely to create another problem. So I fear, Nazreen, if the people in Sindh are not consulted on this issue, then the water can become the language of the past. Assalamu alaikum, I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही है सिंध के अंदर खासकर, विच इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल्स प्राइमरली कमिंग फ्राम द इंडस रिवर, उसको लेके जो कंट्रोवर्सी है जो पिछले कुछ हफ्तों से बनी हुई है, उस कंट्रोवर्सी के अंदर जो डिबेट्स हैं उनके ऊपर मैं आज की इस एपिसोड में बात करूँगा। मैं 3 मेन एस्पेक्ट पे बात करूंगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये कैनाल्स का बैकग्राउंड क्या है, ये 6 कैनाल्स क्या हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बिल्ड की जा रही हैं या प्रपोज्ड हैं, और फिर हम बात करेंगे कि सिंध के ऑब्जेक्शंस क्या हैं, ख़ासकर सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट हैं उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, सिंध की गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शंस क्या हैं, और फिर हम बात करेंगे पॉइंट के ऊपर कि हाउ इट इज़ डेंजरस, ये जो कैनाल्स बनाना है क्यों ये डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, और इसकी क्या रेमिफिकेशंस हो सकती हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इंटीग्रेशन, फेडरेशन, इसके ऊपर, और लास्ट में हम इसको वे फॉरवर्ड की बात भी करेंगे एंड देन विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन। सो बिफोर आई बिगिन डिस्कशन ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू, नाज़रीन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपको जैसे पहले भी कहा था कि एक करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स जो CSS का सिलेबस है और PMS का है, उसके बाद जो प्रोग्राम है ऑनलाइन प्रोग्राम, उसका नेक्स्ट बैच शुरू होगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। दिस कोर्स विल बी एक्सट्रीमली वाइटल एंड इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अपीयरिंग दिस ईयर्स एग्ज़ाम। और इस हवाले से ये जो कोर्स है ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया दैट इट विल कवर ऑल द सिलेबस एज वेल एज द इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द पेपर्स, और बिसाइड दैट जो उसके बाकी रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स अबाउट द सेम कोर्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द गिवन नंबर थ्रू व्हाट्सएप। बिसाइड्स दैट आपको स्क्रीन पे एक और कोर्स नज़र आ रहा होगा विच इज़ पोलिटिकल साइंस कोर्स फॉर द CSS and PMS aspirants. Now, I'm offering this online CSS PMS political science course for the first time, and this course will cover all the important dimensions of the examination, और जो कि चाहे CSS हो या PMS हो उसकी तमाम important dimensions को cover करेगा, and it would be run parallel to the current affairs and Pakistan affairs course. And for more details about both of these courses including political science, you can contact on the given number. अब नाज़रीन अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं विच इज़ अबाउट द कैनाल इशू विच आज़ बीइंग प्लान बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन मोस्टली इंडस रिवर। नाज़रीन ऑब्वियसली अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने आज से कुछ हफ्ते पहले ग्रेजुअली इट केम टू बी नोन दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ साइलेंटली ट्राइड टू टेक अप्रूवल फ्राम द इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कैनाल्स। और उस हवाले से जब वो इरसा में गया मामला तो जो सिंध के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, बट डिस्पाइट दैट इरसा अप्रूव्ड इट। और उसके बाद से एक सिंध के अंदर जो है वो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस हवाले से। और बिसाइड दैट हम देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्टी है जो कि ऑफिशियली तो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है बट इट सपोर्ट्स द गवर्नमेंट, उन्होंने इसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया। सिंध की असम्बली ने इन कैनाल के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन भी पास की। तो अब आते हैं देखते हैं नाज़रीन कि ये कैनाल का आइडिया है क्या। नाज़रीन, this proposed construction of the 6 canals
5 of them will be on Indus River, and one of them would be from it will be coming from the another river which is the Sutlej River. और ये जो canals का idea है, this is part of the Green Pakistan initiative, which is the government of Pakistan initiative under which it wants to attract around $6 billion of investment, mainly from the Gulf states of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar and Bahrain over next 3 to 5 years by corporate farming, and it also aims to cultivate around 1.5 million acres of barren land and mechanize the existing 50 million acres of agricultural land across Pakistan, but most of them are from the South Punjab as well as Sindh and Balochistan. Besides, Nazreen, this project is also aimed to irrigate about 4.8 million acres of barren land by constructing these 6 canals, 2 from each Punjab, Sindh and Balochistan. And 5 of them, as I said earlier, are from Indus River, and the 6th canal will be coming from the Sutlej River, and that would जो Sutlej River की canal है वो irrigate करेगी चोलिस्तान डेजर्ट को और पंजाब का जो साउथ पंजाब के अंदर, और उसके हवाले से हम देखा कि जो कुछ दिन पहले जो है वो उसकी इनाग्रेशन हुई भी, और कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है इट हैज़ ऑलरेडी बिगन on the Cholistan under the Green Pakistan Initiative GPI, with the authorities approving 4,121 cusics of water to irrigate around 0.6 million acres of land in the Cholistan desert, which is an area जो कि larger than Lahore है. Lahore is the second largest city in Pakistan. So ये जो proposed canals हैं नाजरीन, ये मतलब Indus River से सारी नहीं है, but they are mostly from Indus River, but not all from Indus River, and they would come not just from Punjab but also from Sindh and Balochistan. और उस हवाले से जो पहला इनिशिएटिव है चोलिस्तान के हवाले से GPI का जो इनिशिएटिव है, that has been inaugurated by Maryam Nawaz and the army chief at a few days back. नाज़रीन, ये जो GPI इनिशिएटिव है, दिस हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड एट सेम टाइम इस कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो पायलट प्रोजेक्ट है, दिस इज़ लाइकली टू एक्सपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू टर्न पाकिस्तान एग्रीकल्चर इन टू अ मॉडर्न एग्रीकल्चर, और मेकनाइजेशन की जाएगी, कॉर्पोरेट फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा, एंड फॉर दैट दीज कैनाल्स आर कंसिडर्ड टू बी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट दोज कैनाल्स this entire GPI initiative is likely to come to a halt. तो अब नाज़रीन इसकी बात है कि ये जो इनिशिएटिव था, दैट मेक सेंस कि ये एक ब्रॉडर पार्ट एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, बट वाई सिंध इज ऑब्जेक्टिंग टू इट, वाई सिंध इज ऑब्जेक्टिंग टू द कैनाल्स, इज सिंध इज अपोज टू द कैनाल्स और इज इट अपोज टू द GPI प्रोजेक्ट इन जनरल, इसके ऊपर हम बात करते हैं, सिंध के ऑब्जेक्शंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला नाज़रीन सिंध का जो ऑब्जेक्शन है वो लीगल ग्राउंड पे है. वो कहते हैं कि ये जो 6 कैनाल्स हैं, दे आर वायलेशन ऑफ द फेमस एंड द हिस्टोरिक 1991 वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड अमंग प्रोविंसेस. जो चारों प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में 1991 का वाटर का अकॉर्ड था, वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड, उसकी वायलेशन है, बिकॉज अंडर दैट अकॉर्ड जो सिंध है उसमें कोटी डैम से नीचे डाउन स्ट्रीम जो है, दे हैव टू हैव 10 million acre feet of water, but in the last 25 years, out of those 25 years, it was possible to have this much water only 12 times. So 50% से ज़्यादा टाइम्स जो हैं वो ये जो रिक्वायरमेंट है इस अकॉर्ड की, ट्रीटी की, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी की, वो पूरी नहीं होती. और उसमें अगर आप ये कैनाल्स ऐड अप करेंगे, हाउ यू वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट मोर वायलेशंस ऑफ दिस अकॉर्ड. दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन द केस ऑफ द सिंध गवर्नमेंट. Besides that, Sindh government also believes, and the nationalists believe, that these canals also violate the constitutional mandation by the CCI, Council of Common Interest, which was actually mandated to deal with the interprovincial and federal provincial issues. और नाज़रीन, चूँकि ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही फेडरलिस्ट 2 में है, एंड दैट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ द CCI, एंड सो फार CCI हैज़ नॉट अप्रूव्ड दीज कैनाल्स, एंड देयरफॉर विदाउट द अप्रूवल फ्रॉम द CCI, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस कैनाल इज कंसिडर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल.
सो पहला मेजर आर्गुमेंट जो सिंध का है दैट इज ऑन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स. Besides that, there is another factor as well. They also believe, सिंध की जो नेशनलिस्ट हैं और सिंध की जो गवर्नमेंट है, दे बिलीव दैट दिस कैनाल्स कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है, दिस वुड आल्सो हैव डेंजरस इम्पैक्ट्स ऑन एंड कैटलाइजिंग इम्पैक्ट्स ऑन द सिंध डेल्टा रीजन, which is already at the risk of collapse mainly because of the climate factors. But these canals would add wood to those problems, and as a result of that, thousands and thousands of people are likely to be affected downstream. और जो डेल्टा के इलाके में रहते हैं, ecosystem is likely to be affected in the delta region because of the shortage of fresh waters that is needed in the delta region. लोग ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगी उनकी, पीपल आर लाइकली टू मूव टुवर्ड द फिशिंग, बट अगेन लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, ये सारे जो हार्म्स हैं वो आएंगे. बट फिशरीज इज अगेन हार्डर टू फाइंड इन दीज रीजन्स, सो पीपल आर एडवर्सली इफेक्टेड बाय दीज थिंग्स. तो जो डेल्टा रीजन है उसके अंदर जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, दे आर बीइंग इफेक्टेड बाय इट. बिसाइड्स नाजरीन, जो इंडस रिवर है दैट फॉर्म्स अ मेजर सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टेबल जो सिंध के अंदर मौजूद है. सिंध के अंदर वाटर क्राइसिस मौजूद है, वाटर सिक्योरिटी प्रॉब्लम मौजूद हैं. अगर ये कैनाल्स बनती हैं और इंडस के अंदर पानी का फ्लो कम होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो सिंध की वाटर सिक्योरिटी इशूज़ हैं, दे आर लाइकली टू गेट एग्रेवेटेड बाय दीज कैनाल्स. And lastly, they also believe that by these canals, the Sindh will lose its share of water, thereby impacting the water availability for the crops and agriculture in Sindh. And because Sindh is one of the major sources of cotton production as well as other kind of agri products, therefore these canals are likely to have a special impact on the farmers in Sindh whose lives depends on these things, and even Pakistan's economy is to some extent, to a large extent, depends on the agriculture coming from Sindh, and particularly the cotton coming from Sindh. Therefore this will not just be a loss to the Sindh, but it will also be a loss to the entire Pakistan. ख़वातीन नाज़रीन, अगर ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और ख़ासकर जो एहसन इकबाल साहब हैं, ही हैज़ लार्जली डिसमिस्ड सिंस ऑब्जेक्शंस. इफ़ द फेडरल गवर्नमेंट गोज़ अहेड विद दीज प्रोजेक्ट्स, व्हाट कुड बी दी पॉसिबल रिपरकशंस और रेमिफिकेशंस, कैसे ये डेंजरस हो सकती है? तो 3 तरह के डेंजर्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और हो भी सकते हैं. वन इज़ टू द फेडरल यूनिटी. नाज़रीन, ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के अंदर हम कभी भी एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन नहीं रहे हैं, बट सिंस द पोस्ट 18th अमेंडमेंट वी एक्सपेक्टेड दैट द गवर्नमेंट वुड फॉलो द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंसेस and would not impose decisions on them even for the sake of the development. However, this decision on the canals is likely to weaken the federation, or even if the federal government ultimately agrees to the Sindh's demand, abandons the project, still the fears in the minds of the Sindh, they are likely to be deeply rooted, particularly because they would always fear that federal government is adamant to tease upon them occasionally on issues of water distribution, and previously when they were teased upon was the issue of Kalabagh Dam, and now it's these canal systems. So I think this controversy has already damaged Pakistan's federal unity, but it will be dangerous to go ahead and create further weakened federation Pakistan, something that Pakistan cannot afford. बिसाइड्स सेकेंड डेंजर नाज़रीन ये है कि हम देखते हैं कि ऑलरेडी जब मैं आज से बात भी कर रहा हूँ आज, तो बलूचिस्तान के अंदर कल प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए. आज बलूचिस्तान के अंदर बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, शटडाउन हड़ताल है, व्हील जैम की स्ट्राइक दी गई है. अब हमने देखा कि जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, उससे पहले केपी के अंदर जो है वो टेररिज्म एक्सट्रीम पे है. सो व्हेन देयर इज ऑलरेडी अ काइंड ऑफ वोलेटाइल सिचुएशन इन पाकिस्तान's 2 रेस्टेड provinces, KP and Balochistan, and we are grappling with that violence that comes from them. अगर हम सिंध के अंदर भी इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर जाएंगे, सिंधी नेशनलिज्म को भी प्रोवोक करेंगे, तो आई थिंक पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पे शायद ये अफोर्डेबिलिटी बनती नहीं है. दिस वाज इल टाइम्ड and this was a bad time, and I don't know why policymakers fail to understand that sometimes even if you do the right thing at the wrong time, it does not yield the desired results. So I think going for these canals, creating controversy of these canals by the federal government at this point of time, when we already have 2 rested provinces in Pakistan, this is a very dangerous game that is being played with Pakistan. Last but not the least, Nazreen, another impact is on the coalition government. We know that Shahbaz Sharif's government, जो PMLN की government है, it is in the government in power mainly because of the support from Pakistan People's Party. Although Pakistan People's Party did not join them, but without their votes, Shahbaz Sharif will no longer be the Prime Minister of Pakistan.
So in that way, if the federal government goes ahead with this initiative, then its own survival is likely to be threatened, because a People's Party will be forced by the local sentiments to part ways with the PMLN, something that is likely to create and escalate another political crisis in Pakistan. अब नजर आते हैं वे फॉरवर्ड क्या है. I'm not saying that way forward is to totally abandon everything. What I'm saying is that a unilateral decision so far has harmed Pakistan always. Therefore, the best way forward is to take along the stakeholders. If there are peer party in Sindh, there are other parties, nationalist parties in Sindh, we can consult them, we can convince them, and we can try to listen to them, and we try to work on their demands as well. तो एक consensual जो approach है, एक consensus building की जो approach है, जो कि एक federation का hallmark होता है, उस approach को लेके we can solve this problem. But if we don't listen to them and we impose our will on them, this is something that has weakened Pakistan historically, and this is something that is weakening Pakistan today, and this issue will only be part of it. And last but not the least, Nazreen, we need to also be engaging the stakeholders, and we need to also engage the experts on this field as well. जो expert opinion है, it is a scientific issue, but in federation, scientific issues के साथ साथ it is also a political issue. Therefore, it has to be discussed, debated at the two levels, at the technical experts level as well as at the political level. Unfortunately, neither of these debates is taking place in Pakistan. There are those who support it, there are those who oppose it. There are not those who want to bridge the gap between the two and who are willing to bring them together on one table. So only CCI will not solve the problem. It has to be brought to the public sphere, and the prime ministers, the MNAs, the MPs, they had to engage the local elements, जो nationalist parties हैं, local leaders हैं, farmer unions हैं, fishermen हैं. They need to be taken on board on these issues so that a consensus could be built on such an important issue. So to conclude, नाज़रीन, हम कह सकते हैं that पाकिस्तान की जो फेडरेशन है, it has been facing issues after issues. Last time Pakistan got separated was because we didn't listen to the demand, particularly on the issue of language from East Pakistan, and that issue then led to the broader mistrust, which translated into other economic and political and other issues. Same is happening in Pakistan right now. There's already a hardened approach on Balochistan. We are, as Army Chief said, that we need to have a hard state approach towards Balochistan. If we are having a hard state approach toward Balochistan and Sindh, using the same approach in Sindh is likely to create another problem. So I fear, Nazreen, if the people in Sindh are not consulted on this issue, then the water can become the language of the past. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.